Re- गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु Namaskar, Masters. It's a very warm welcome. Very good morning. Um, Thank you for joining this session, and where we all enlighten with Bhagavad Gita and Bhakti Sara, the ultimate enlightenment path. What Sri Krishna has given us, bestowed us, his presence and his blessings with all of us. So today we will start with a story. As usual, every day I bring up a story. Sorry for that. But yeah, it was ancient times. There was a one king. He is from Ikshvaku dynasty, and his father was Manadatta. So today we are learning his life journey. So this king, he was very profound in his war skills. He was a very good fighter, and with his fighting skills, he have handled many wars and helped Indra in Devata wars also. So after some time, Indra when Sri Kartikeya, the son of Lord Shiva, he was fighting the demons. He was fighting the evil Rakshasas. So Indra once uh, go to the Kartikeya and say, I have a very good fighter. He's a very good friend of me. So he will help you if you ask him. So Kartikeya said, okay, thank you for that. I will take him in and I will also ask his help. So in this nature, uh, this king have joined the war form of Kartikeya. Then he have fought many several years. The several years, and he was able to kill Kala Yavana. So after killing Kala Yavana, and they have won the war, so Kartikeya, he turns up to Kartikeya and says like, "Thank you, Prabhu, for giving the opportunity. Now I would like to go to my home, which is on earth, Dharti." So Kartikeya says, you are in a Devata timeline. In this timeline, you have already fought for several years. So several years in Devata timeline would be several decades on the earth. So by now, when you reach Earth, all your family, your queen, your sons, all your family might have descendant to the other lifetime. So you have no one left there. So would you still like to go to Earth plane, or you still want to remain with me?
So he was devastated by this news. He didn't understand the timelines were different between the Devataloka and Earth. He never knew that. So it was very awakening for him. And he said, Kartikeya, now what I will do, what I'm supposed to do on going on earth, what will I achieve on going on earth? So Kartikeya said, so stay along with me. There are several wars to come. You stay in my Sena. You become my warrior friend. So this king has said, no, I just want some rest. It has been very long time since I have rest. I've been fighting this war without a break on several years. So I just want some rest. Kartikeya bestowed me with the rest. So Kartikeya says, okay, you can go to your sleep. So, where would you like to sleep? You want to sleep here or you want to return to Earth? So, if I want to sleep, I want to sleep in my home. So, I will go on Earth plane and I want to sleep. And Kartikeya best of him with the sleep. And this king asked him, if someone wakes me up from my sleep, they will turned into ashes when I see them. So best of me that with that also. So Kartikeya says Tadhastu. So this king goes onto the earth plane and he sleeps in a cave. And here we have to understand sleeping is not a merry sleeping. He was doing what we call he, Nidra Avastha. He was doing yoga in his Nidra Avastha. So that we have to understand here. So after a few decades, so what happens? Krishna was very much loving and in pleased manner with Radharani, and Rukmini Devi have come to see Krishna. So it what happens? Rukmini Devi, she gets jealous and angry on Krishna that he is very pleasing, he is very lovable, and he is very inclined to Radharani. I am just sitting here, he doesn't care me. So, Rukmini Devi, with the anger, she goes on to the a forest, Dindivarna, uh, Di- uh, Dindiva, Dindirvana. So after Rukmini Devi, Krishna also follows Rukmini Devi, saying that it is not like that. I also love you. So Rukmini Devi was very angry, and she went to Dindirvana. So to please her, Krishna have been there for some time. Uh, in this meantime, Krishna was pleased to see one of the person where he was serving his parents continuously, rigorously, with no hush hush, and with a complete pure patience and dedication. So by this, Sri Krishna was very amused and said, like, he will be my devotee. And Krishna went to his home, and this devotee said, who are you? I am Sri Krishna. I have came to bestow you. Then this person has said, currently I am right now serving my parents. So he'll give a break and say, you sit on that break and I'll come to you. So he was Pundalika, and now as we see the Panduranga and Rukmini Devi, they both stay in uh, Pandurangapuram because of Pundalika. So this Pundalika, who was he? The very story at the beginning I have said about the king, he was the reincarnation. His past life was the king, which I have earlier said. So Pundalika, last birth was the king, which I have said. So the king name was Mukukunda. So Mukukunda's the next life was Pundalika. So why Sri Krishna bestowed him? That we have to understand. So firstly, think when Mukukunda have done with all the materialistic things, he was exhausted, and he asked Kartikeya for a Nirjana Yoga.
He was sleeping and he was doing yoga. He was ultimately seeking the universal consciousness to refresh himself. So, when Mukukunda was sleeping, um, uh, Sri Krishna went to Mukukunda and he bestowed him. He woke him up in a very Krishna's way. And that story will we all know, but we will recite on some other day due to the time constraint. So I'm mainly concentrating on the conversation between Krishna and Mukukunda here. So Krishna and Mukukunda. So when Mukukunda woke up, he have very pleased to see Bhagwan himself, and he was well उसमें उनके श्री कृष्ण भगवान के रूप में छाए हुए थे। वो रूप का दर्शन करके उस रूप में विलीन हो गए थे। तो Mukukunda was seeing the beauty of Krishna, and Krishna started saying like, Mukukunda, now you woke up from your sleep. Now what you want? I have offered you one blessing, as you have helped all the devatas relentlessly, without restlessly, without any selflessness. But yet you have committed a sin of killing many innocent people in the war. You have committed a sin of killing many animals during your time. You have committed a sin of not performing your duties, your family duties towards your family. So you have all these sins. But yet, as you have served the universe, fighting along the Kartikeya and killing the Rakshasas. So I'll give you one vara. You ask me. So, Mukukunda says, right now I am pleased with your avatar and seeing your beauty. I am not getting anything in my mind. But yet, as you say, I have committed those sins. I want to get over my materialistic thinking and materialistic thought procedure. I was very much tarnished, and I was very much sorrowful when I come to know I have no family on this earth. So, please detach me from these links, detach me from the materialistic things, oh Krishna, and give me the ultimate liberation for this soul. That's what Mukukunda asked. So Krishna said, as of now, you are still entangled with the relations. You are still entangled with the bondages. You are still entangled with your past. In this lifetime, I cannot bestow you that. In the coming next lifetime, as you have done, as you have known the blissfulness of yoga, become a yogi and do pranayama. And by merely doing pranayama, you might तुम भटक जाओगे रास्ते से, क्योंकि बहुत सारे मुनि भी वैसे ही भटक गए. What you will do is, you have to include bhakti yoga and do the kriya, meditation, yoga, and then I can bestow you with the liberation. Liberation is not someone will give you. Liberation is itself. You have to incline yourself towards the liberation and achieve it, and then you will get to know the nirvana. So in this lifetime, Pundalika, he was still attached to his materialistic things. In the starting of his life, he was not very good. He was very rude. He was very angry. He was very mischief. He was he was very mischief towards his friends. He was hurting everyone's emotions. He was doing all these because of his past karma attachments. So he gets married. After getting married, he was very inclined to his wife. He was serving his wife, and he again ignored his parents in this lifetime as well. So when they all turn up to move to Kashi, on the way they sleep near a nearby asrama. So this Mukukunda woke up in the middle of the night and see there were three apsaras
three beautiful ladies walking into that ashrama. They were doing all the chores of ashrama. They were cleaning, they were tidying up, they were cleaning Muni's vastras, and after doing everything, they move on to prayer room and they pray, and in that Muni's the sage ashram. So that sage was Kakuti Maharshi. So after when they return, as they enter the ashram, they was very with dirty and tarnished clothes. When they return from the after doing all the chores in the morning, early in the morning, Mukukunda, right now the Pundalika says their vastra were their dresses were very beautiful, very clean, and they were also very clean. They were also very pleased with the joy. They were returning to their homes from this sage ashram. So he haven't believed what he have seen. Firstly, it is a sage ashram. Why would ladies, that too in a beautiful ladies, just like Apsaras, enter the sage and in the mid of the night and doing all the chores, nothing else? So he was all questioning, and the next day, Pundalika says, like, I am not dreaming it. I know it is the truth. So I will wake up this night and see. So that night he woke up, and while the Apsaras, the beautiful ladies, were returning after their chores in a early in the morning, he stops one of the Apsara and say, who are you? Why have you come to this stage? And I have seen you running with the dirty clothes and with a relentless in on your faces. And after praying, after doing the chores, without resting, how have you become this in a pleased manner? So they were Ganga, Yamuna, Saraswati, who were serving that sage. So they said, Pundalika, see, we are taking up all the thoughts, all the papa karmas of of the manushas, humans. So we are also attached with those. So what we are doing is daily we are coming to the sage and serving him. By serving him, we are renewing ourselves, cleansing ourselves every day by our karma prakshalana we are doing right here. So how can I also get a very good clothes and a very nice body like you, a refreshed body like you? So these ladies, these Mahanadi say, uh, Pundalika, right now you are inclined to the Papa Karma. You are not paying attention to your parents. You are not serving them. You are still inclined into the Moha. You are still inclined into the Papa Karmas. You are still um, uh, you're still facing that struggle of inclination. So just get out of it, and then you see the world. The sage will bestow of you, and Paramatma will bestow of you. First, you have to change your inclination from the badly deeds, from the unnecessary deeds to the necessary ones, the good ones, which we all have to go through. So change yourself and the change will come to you. That's what Ganga Yamuna Saraswati told them. And later on, Pundalika, he started pleasing his parents, serving his parents relentlessly, knowing his all the past actions of this lifetime. And he have changed his inclination towards the good. Good means he was changed his inclination towards the serving parents. He was doing the karma yoga, that what we are all speaking, what we are all discussing all these days. So the good karmas he was doing, and then Sri Krishna appeared to Pundalika, bestowed him with a very as we all know, right now Panduranga and Pundarika and Pundalika have very much attached with one another.
So we all can also attach with the universal consciousness and Krishna Prema Tattva by doing and performing our karma yoga, our kriyas, which are destined to us, which are aligned to our lifetimes. So by doing serving uh, in kriya karmas, in a kriya yoga, one can achieve the God, one can achieve the Krishna Prema Tattva, one can achieve universal consciousness uh, um, without any what to say division in God's love. Panduranga has completely given himself to Kundalika. So he was not into the Bhakti Yoga early. He was just serving his parents with a completeness in his action. So that's all what we all have to get upon. So by starting with this story, we'll continue with our shlokas. We are reciting sorry, we are reciting Karma Yoga. Last in the yesterday's session, we have recited Shloka 36. So I am repeating that. अर्जुनोवाच अधः केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषा अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता. So here Arjuna is saying to Krishna, Hey Krishna, Hey Panduranga, Hey Yaduvamsiya, please tell me why the humans doesn't yet they don't want to perform the papa karmas, uh, the not righteous actions, but yet they are performing them, and they are getting the karmanubhavas from performing those papa karmas. Why we all being inclined to papa karmas? श्रीभगवानुवाच काम एषः क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भव महासनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्. Here, the Sri Krishna is answering to the Arjuna's question earlier. So Krishna is telling, it is the lust alone which is born of contact with the mode of passion and later transformed into anger. Now, this as the sinful, all devouring enemy in the world. So, when we start a work, we do it with a passion. When we achieve that, we get a credit of that. We say we have done everything. So, when someone is trying to achieve that, we get anger uh, and saying that I am the superior of this action, that we are actually not. So when we are trying to be overly do the things, overly attach ourselves to the things, then we are meant to do the papa karmas. When Sri Krishna asked in the mediation to Kauravas, saying that you give just 5 sthalas to Pandavas, they will settle and we will not have the war. Indraprastha, Swarnaprastha, Panduprastha, Vyagraprastha, Thitaprastha. Just give all just give what they have asked, the 5 places. And here, as we know, Kauravas reply, all the places are ours. We are not going to give it. And then the Mahabharata started. So here we have to understand that do not attach ourselves with the anger, lust, greed, sin. Then we also have to have that Mahabharata within us. So here in Kali Yuga, Mahabharata will not have in other passion. We will have Mahabharata in ourselves. So the next sloka, धूमेन व्रियते वह्निर् अधर्धर्सो मलेन च यथोल्बेन वृथो गर्भस्तदा तेनेदमावृतम्. The meaning of this verse is
Just as a fire is covered by smoke and a mirror is masked by dust, an embryo is concealed by the womb. Similarly, one's knowledge gets shrouded by desires. So here Krishna Bhagwan is saying, जैसे हम जैसे अग्नि के साथ धुआं होता है, जैसे हाँ, मिरर के सामने डस्ट होता है, यू कैनॉट सी प्रॉपरली ऑफ योर सेल्फ व्हेन द मिरर इज कवर्ड विद डस्ट एंड one will not realize his knowledge with he attaching his desires to the knowledge. So we all have to understand that. आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष् दुष्पा दुष्पारेणानलेन च दुष्पूरेणानलेन च sorry आवृ आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च. So the meaning of this verse is the knowledge of even the most discerning gets covered by this perpetual enemy in the form of insatiable desires, which is never satisfied and burn like fire, O son of Kunti. So Krishna is saying, even the Mahatmas also face the same problem, also face the very attachments of desires. So when they shred a desire, you will get the ultimate knowledge, the jnana that burns as a fire, jnana agni as in you, and making you inclined towards the liberation. Just like Rukmini, in the story, Sri Rukmini Devi, she knows of everything. She has the wisdom of understanding the Krishna, but yet in that circumstance, he also got an anger and moved away, got apart from the God God got apart from the Krishna Prema Tattva. Yet, after understanding herself, what she have done, she have returned to Sri Krishna Prema Tattva. Rukmini herself walked to Sri Krishna and settled in Pandarikapura along with Sri Krishna. So, no one is apart. कोई परे नहीं है डिजायर्स के बाहर कोई नहीं है पर हमको खुद को झांकना है परखना है कि हम किससे अटैच्ड है भगवान से या हमारे डिजायर से इंद्रियाणि मनोभृतिस्तधिष्ठानमयुच्यते एतैर् एतैर्महो यतेष ज्ञानमावृत्य देहिनाम्. Here Sri Krishna is telling these senses, mind and intellect are said to be breeding grounds of desire. Through them, it clouds one's knowledge and dilutes the embodied soul. So Krishna is saying, हमारा कर्मों से, हमारे भावबंध से, our reasoning mind, our intellect, so-called always turn us to the wrong path, wrong way, saying that it is not possible when Bhagavan himself appears in front of us. So, Bhagavan, the universal consciousness does not bind itself to our intellect or our mind because our mind and senses are just designed so that we serve the worldly deeds of this earth plane. So Bhagavan, universal consciousness is beyond that. So once we get those eyes, get those ears, get those senses, once we grow up those senses to sense the universal consciousness, then we understand the consciousness is without the reasoning.
इट इज विदाउट द इंटेलेक्ट, इट इज विदाउट द माइंड। अरे ये कैसे हो रहा है, उसका हमको पता ही नहीं चलता है। बस हो जाता है। when we are ourselves surrendered in the universal consciousness flow through us, and it is possible. But if you bind it with the reasoning of your mind, if you bind it with the reasoning of your situations, so-called situations that you have faced on this earth, it is merely impossible to understand it. So we are moving on to the sloka 41. Just a minute, friends. So while this is loading, yeah, it has loaded. Sri Krishna have heard me. So while it is still again loading, sorry for that. While this is loading, I'll tell a story. There was one Purohit. Um, he was facing uh, uh, who was facing trouble. There was a temple which he was serving, uh, and that temple have gone to the government custody, and now he was losing his ancestral home, which was attached to the temple as well, and he was fighting because the temple was built. It was built by their ancestors, and their ancestors have sacrificed their lives serving that temple. Now that the temple is developed, the government wants to take that over. So it so happened at the starting he faced many he was facing many furious allegations. He was facing um, many allegations on his ancestors, on him, but yet he was fighting with anger. He was fighting with a immense ultimate force. He was questioning the government that it is our ancestral property. Our ancestral property have built this temple, and we are serving it, and we will serve it. So on this path, when he was attached to the world, it is anger. He was not able to get the good results on in the court. Then he moved on to Buddhi. He applied his knowledge. He was very much a scholar. He was in those days. He was a very much a scholar. He have learned the Tattva Shastra, Nyaya Shastra, and many Agama Niyamas. So Agama Nigamasa. He was applying his knowledge to win the court case. He was earlier he was with anger. Now he was with a buddhi. He was applying them, and later, after some years, he was still fighting relentlessly to get the temple. Then at the next state, he have got manas. He was approaching the people that people, you come forward. You tell this is our temple. Till then, that Purohit, he was saying it was my ancestral temple, and that part of lifetime he have got that jnana that people, you come forward and say this is our temple, we have to protect it. Then even then he was still struggling with the case. Then he was moved to jnana bhakti. Now he was purely in the silence every day without any thoughts and of his actions. He was relentlessly serving Bhagwan. He was actioning towards the Bhagwan deeds. Now he said, Bhagwan, जो कुछ भी होता है तेरे ऊपर. You tell me what I have to do, I will do it. And then he won the case. After 15 years of a struggle, he won the case. And the ancestral home, what he have
taken off. The government have built a new home for them and moved them the very next to temple, and he is still serving relentlessly to the Bhagavan. He have won the case. So one have to go through this path. And I personally experienced this lifetime. When I was a child, I didn't understand this. Now, when I'm reading the Bhagavad Gita, I have understood his lifespan, why Bhagavan has given him the struggle to understand, to evolve himself, and he have become Sakshat Bhagavan Swarupa now. तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्याधौ नियमा भरतवर्षभा पापन् मां प्रजहिह्येन्यां ज्ञानविज्ञाननाशनम्. So in this sloka, Bhagavan says, therefore, O best of Bharatas, in the very beginning, bring the senses under the control and slay this enemy called desire, which is embodiment of sin and destroys knowledge and realization. Indriyani paranyahu, indriyebhyah param manah, manasastu para buddhi, yo buddhe paratastu saha. So here Bhagavan explains these senses are superior to the gross body and the superior senses in the mind. Beyond the mind is the intellect, and even beyond the intellect is the soul. So जैसे मैंने आप सभी लोगों को कहा है कि पुरोहित पहले अपना माइंड को यूज कर रहा था. He was into his senses, anger. है ऐसा कैसा हो सकता है? Then he moved to buddhi, intellect. But even beyond the intellect is the soul. He have surrendered himself. Hey Bhagwan, अभी जो कुछ भी होता है तेरे ही ऊपर. Then he won the case. And the last verse of Karma Yoga is एवं बुद्धेः परं भूत्वा संस्तभ्यातात्मनात्मना जिह्वा शत्रुं महाबाहो कामरूपदुरासदम्. So so the meaning of this verse is thus knowing the soul is to be the superior to the material intellect. O mighty armed Arjuna, subdue the lower senses. Manah chitta karaka, leave that. By the higher self, the strength of the soul, and kill this formidable enemy called lust. जो काम जो हम हमारे अटैचमेंट से होते हैं वही हमारे शत्रु है. उनको किल करो, उसके परे जाओ. बी द बॉन्डलेस, बी द वन अनटाइड, be the one untangled. Then you will get me. Then you will get Paramatma, your supreme soul. Then you will achieve your higher soul. On this note, we have recited completely the Karma Yoga. Thank you for this, masters. Thank you for your enlightening energies and sharing with us. So we will all close our eyes, clasp our hands, hands into hands, close our eyes, and silence in our mind. On a count of 1, 2, and 3, we will drift ourselves to understanding our soul and get the connection with the Paramatma, with as a channeling attachment from our soul, not from our buddhi or jnana. One, breathe in, breathe out, friends. Breathe in, breathe out, breathe in, out. Call upon each one of our higher self, which is attached to our supreme self, Paramatma.
I call upon Sri Krishna Prema Tattva. Hare Krishna. I call upon all the enlightened masters who have laid this path to us. I call upon the Mother Earth who is serving many of the saints, who is bearing siddhas, sadhus. He himself is in a circle of Karma Yoga without expecting anything from us. Yet she is serving us relentlessly. Even our mother get rest, but धरती माँ का कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है. She is serving the planet relentlessly. प्रकृति हमको सब कुछ दे रही है और निरंतर वही कर्म योग में बंद कर रही है. Just realize the nature, how it is serving the human, how it is serving the life on this earth. And why does she have to serve the life? Because she is just helping us to evolve our souls beyond this body, to understand the Paramatma. She is giving us an opportunity to incline ourselves in the path of superior higher self, the universal consciousness, the ultimatum that we all can achieve. It's not just the one day or the other day. It can be achieved right now, right at this moment. Just think it's possible. Let the thoughts flow, masters. Do not pay attention on your thoughts. Just forget whatsoever happened before this class, this session. Understand you are a soul. We all are wandering souls, looking for our higher self, looking for our ultimate satisfaction. Get the strength in you. Focus on the love, on the supreme consciousness. Be beyond the rules and regulations of this body. All the identity, the name, fame, everything is attached to the body. Soul is always free. Just work with your soul, travel with your soul, and you may see wonders. पुरुषोत्तम के नाम स्मरण करके उनको पाना है.
वही प्रेम तत्व की अनुभूति हमको करना है। एक ही विचार करना छोड़ दीजिए मास्टर। Do not analyze your thoughts. Just let them flow. Don't pay attention. Use the questioning that you have got in the right way. Not questioning that तुम कब आओगे? When will you reach you? Or when will I reach you? Or how do I reach you? These questions doesn't have any meaning, masters. The ultimate meaning is Prabhu, universal consciousness. We have to see through it without questioning, without reasoning, without thinking. कर्मानुभूति विलीनता से ही में प्राप्ति होती है। अपने आप को सरेंडर कर लीजिए। Get to know him by being with him. We all first want to understand the Bhagwan Swarupa and then want to incline towards it. But let me tell you, masters, it's the other way around. First you get the God, then he will give you the understanding. First you get the universal consciousness, then it starts flowing in you by enlightening you. In whatsoever form it appears to you, you will completely enjoy in the bliss. या वो सीता हो, या वो राम हो, या वो कृष्णा हो, या वो अल्लाह हो, सब हमारी सोच के परे है। There might be several forms, but reach the ultimate bliss is what we all have to do. Each one of us have a superior attribute, so connect to it and reach the universal consciousness. One of you might be good at bhakti. Reach the supreme with the bhakti. One might understand love. आपके प्रेम तत्व के ऊपर आधार करके भगवान की प्राप्ति पा लीजिए, ये संभव है। One might get a desire of traveling to the universal consciousness. So get the desire higher, get the passion in you, and drive yourself towards the consciousness.
Bhagwan doesn't distinguish in what way you are going through. He just understands how relentlessly you are working towards achieving that, towards traveling in the path of wisdom. Never rest, masters, and never fight. Just stay on the line of consciousness, and it will revibrate in every cell of yours. सोच लीजिए आप कितने और जन्म लेंगे भगवान को पाने के लिए। ये एक जन्म काफी है ये समझने के लिए कि भगवान प्रेम स्वरूप है। Our life is to serve humanity. Our life is towards the enlightenment. Our life is towards enjoying the beauty of the universal consciousness, enjoying the beauty of Krishna Amrita. See through him, you understand how beautiful he is. जो उनके हाथ में सुदर्शन है, it's a wheel of change. Do not resist the changes that you have in your life. दर्शन का दर्शन कीजिए, उनके पावर की दर्शन कीजिए। You are also in the wheel of enlightenment, and change is inevitable. So get along with the change. Do not resist. मार्ग भगवान ही दिखाएंगे। मार्ग में चलने की कोशिश कीजिए। Do not decide yourself if that path is right or wrong. Just walk on the path that Bhagwan is showing us. श्री कृष्ण का पांडुरंग का तिलक दीजिए, तिलक का स्मरण कीजिए, उस गंध का स्मरण कीजिए। See through your third eye. When we see through our third eye, our Jnana Kendra, no reasoning will affect it. Some of you might have the light sensation on your brow region, friends. It's completely okay. पांडुरंग के हाथों को देखिए. He rested his palms on his hips, showing us in a statutory mode that he is awaiting for us. भगवान हमारे इंतजार में है और हम किसके इंतजार में हैं? ये हमको डिसाइड करना है।
is there. The universal consciousness is there. It has always been there. And it is only being there just for us. So understand in the path of actions. And pay concentration. Get the love. सुदामा ने क्या लेके आया था श्री कृष्ण को अपने झोले में? वो प्रेम लेके आए थे अपने झोले में. No one will be by your side in the path of enlightenment, Master. It is only the Bhagavan who will hold you tightly and walk along by the side of you till you reach the consciousness. हमारी हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे. जो कभी हमारे साथ हो या ना हो, हमको समझे या ना समझे, इसका फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हमारे भगवान हमारे साथ हो, जब तक हमारे हायर सेल्फ हमारे साथ में हो. Nothing just matters. All that it matters is Bhagavan, supreme consciousness, the supreme love, the eternal bliss. बुद्धि का विकास, चित्त अहंकार का विनाश, सर्व प्रेम रूप पुरुषोत्तम ही करेगा. Each one of us have a garland. Imagine the garland on you. Bhagavan has gifted you with this garland to making an effort of knowing him. वो माला ही हमारी अनुभूति है. अनुभूति को पहचानिए, सो अनुभूति में रहिए. Just by being with him is him. रूप अनेक, प्रेम एक, भाव अनेक, श्रद्धा एक, भक्ति अनेक, परमात्मा एक. Get the dissolution in you and unite with the ultimate consciousness.
परमान बुद्धि की प्राप्त होगी। Now we'll stay on this mode for a few more minutes, masters. Each one of you will experience a special form of love God is gifting, and you will alone can understand, can notice that form, and that form is meant for your path. Just walk on that path and rely on that form of love towards the Bhagavan, and you will for sure reach in a very short time, starting from right now, right at this moment. मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप सभी अपने शिखा पर फोकस करें. Concentrate on your pituitary gland. It is back of your head where the shikha is placed. Imagine the pituitary gland is secreting a liquid, an enzyme, to, towards traveling through your spine and reaching your root chakra. Some of you might have some senses. It's completely okay, masters. The enlightened masters are working with our soul and body together right now. Just give them some time and surrender yourself. Do not reason whatsoever happening to you. A shake in your body, or your cold feet. It's completely okay. Just be there for a moment. A neck pain is also okay. Just free yourself. Be comfortable. That's all it is needed. I thank all the enlightened masters who are with us today, who have worked with us towards our enlightenment. I thank the Supreme Soul, its divinity, which lies in all of us, the Paramatma Tattva, the Prema Swarupa, Sri Krishna Amritam, Shivatma, Parabrahma Swarupa, universal consciousness, and spread out your love to everybody you are connected to, masters. Make a thought that you are spreading your love to whomsoever you are connected to. It will change the world. It will change the future coming towards you. On this note, rub your palms. Place your hands on your eyes, masters.
and thank all the Universal Masters who are with us. And I'm thanking all of you for connecting your energies with me and giving me this opportunity. Thank you. Just see through your palms, Masters, and thank you. Thank you, Masters, for being with me, for understanding my words in the early in the morning. And sorry for my mistakes towards the session. And thank you for your patience and being with me, understanding me. Thanks a lot. Hare Krishna. Hare Krishna, good morning. Thank you so much. And never apologize for anything. Everything happened for a reason. Where Divine give us some time that, um, uh, as in today's chapter, Lord, whatever is happening, it is happening for a reason. Where during that process, I'm thinking that I am doing it. But when I think that way, it is a divine will. I'm in a surrender. I'm not taking anything on myself. So, and today's chapter was like, so many things were hitting in my head. One of the thing is when you mentioned about Ganga, Jamuna, Saraswati, uh, the karma yoga attached with Ganga ji, we know she is mother of Bhishma Pitama, but because she gave her husband this when they get married, she told her husband that कि मेरे को तुमने पूछना नहीं है हमारा जो भी बेबी होगा कि उसके बारे में अगर तुम मुझे पूछोगे तो मैं चली जाऊंगी। तो उन्होंने भी कैसे वो कर्मों के बंधन में आ गए और मोह में आ गए और उन्होंने फिर जैसे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि तुमने ना मेरी वो जो वचन थे वो तुमने तोड़ दिया है, अब तुम ये बच्चे को देखोगे और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तो जो बंधन है वो अटैचमेंट्स हैं वो ऐसे ही डिवाइन हमारे साथ डिटैच करते हैं। किसी प्लान के साथ में होती हैं चीजें, ऐसे नहीं होती हैं। फिर आ रहा था शिशुपाल, जो श्री कृष्ण के बुआ जी के बेटे थे। शिशुपाल का की मदर को पता था कि मेरे बेटे को मारेगा का कृष्ण मार देगा। तो उन्होंने कृष्ण से वचन ले लिया था कि तुम मेरे बच्चों को मत मारना। पर वो विधि का विधान था तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं उसके 100 गुना माफ करूंगा, 100 से ऊपर एक भी नहीं। तो शिशुपाल ने उनको वो उसको तो अहंकार में आ गया कि अरे मैं मतलब मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ ना, कृष्ण है मेरे पास तो 100 है वो है। बट वो गालियां निकालते टाइम वो भूल गया। और जैसे उसने 100 कंप्लीट कर लिए, श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने उसको मार डाला। कैसी कैसी कहानियां आज दिमाग में आ रही है जब हम विकर्मों की बात कर रहे हैं। फिर आया श्री कृष्ण के जो बेटा था प्रद्युम्न, आई थिंक उसका नाम था। जिस जो भी 8-10 दिन का ही था तो वो भी कर्स्ड हो गया था। आप देखो कि एक डिवाइन, वो खुद गॉड है, बट उनकी फैमिली उनकी लाइफ में ऐसी चीजें हुई हैं। तो हम लोग सोच लेते हैं कि मेरे साथ मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है। कर्मों के बंधन है, वो जब हमारे टूट जाएंगे कार्मिक्स तो फिर हमारा रिलेशनशिप वैसा नहीं रहेगा। कल मैं कुछ पढ़ रही थी तो उसमें बड़ा अच्छा बताया हुआ था कि जो हमारे बच्चे हैं, जिस मंथ हमारे बेबीज होते हैं, एक्चुअल में वो हमारे कार्मिक्स को क्लियर करने के लिए और हील करने के लिए उस मंथ में बॉर्न होते हैं। और जब मैंने अपने दोनों बेटों का देखा तो मेरे दोनों बेटे सेम डेट पे बॉर्न हुए हैं। और मेरे मेंटोर के बर्थडे वाले दिन मेरे बेटे दोनों बॉर्न हुए, तो मेरे को तो शुरू से ऐसा लगता था कि ये दोनों बहुत डिवाइन है, स्पिरिचुअल सोल्स आई हैं मेरे घर में, और ये कुछ बड़ा पर्पस लेकर आई हैं मेरे घर में, ऐसे नहीं आई हैं। और जब कल वो पढ़ा तो बड़ा मतलब मुझे हुआ कि मुझे तो आज तक पता ही नहीं है कि हमारे जो बच्चे आते हैं वो हमारे कर्मों को क्लियर करने के लिए और हील करने के लिए आते हैं। कितनी अच्छी चीज है। और ये जो हम लोग सुबह उठ के भगवत गीता पढ़ रहे हैं,
उसमें कृष्ण जी भी उनको यही दे रहे हैं कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट जन्म हुए हैं, पिछले जन्मों के कर्मों के बंधन है जिनको हम लोगों को इस जन्म में भी पूरा करना है। जैसे अभी वो जो किंग की बात आपने बताई स्टार्टिंग में, कि वो कितना मतलब वहां पर देवताओं के साथ में था, बट उसने कैसा बाद में चूज किया और उसने अपने पेरेंट्स को सर्व नहीं किया था। देखो कितना ग्रेट लेसन है यहाँ पे हमारे पास। अगर हम अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को प्रायोरिटी नहीं देते, अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरह से नहीं करते हैं, तो हम लोग मतलब अपने कर्मों को नहीं काट रहे। और एक चीज होती है कि जो चीज चली गई है फिर उसके बारे में मत सोचो, उसके साथ में अटैच मत हो, क्योंकि आप शायद अटैच्ड हो, आपको लगता है कि आपने कर्मा फिर अपने लिए क्रिएट कर लिया, पर जो बंदा डिटैच हो गया ना, जो उस चीज से बाहर निकल आया, उसने अपने आप को कर्मों के बंधन से फ्री कर दिया। तो चीजें वही हैं, और जो श्री कृष्ण हमको ये समझा रहे हैं, अर्जुन को नहीं, ये वो हमको समझा रहे हैं कि तुम लोगों को अपनी बुद्धि को ज्यादा इस्तेमाल मत करो। तुम सोचते हो तुम कर रहे हो, ये तुम नहीं कर रहे, ये तुम्हारे जिस समय काल में जो चीजें जैसे घटनी है वो वैसे ही होंगी। कई बार जैसे अभी श्री कृष्ण के बेटे का बताया कि वो कर्स्ड हो गया क्योंकि जो भी ये सारी चीजें हुई हैं। तो कई होता है ना, कई बार माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे बड़े गलत निकल जाते हैं, या बच्चों के ऊपर कोई कर्ज कर देता है, क्योंकि जो चीजें आपने डेवलप की है, कर्मा क्रिएट की है, वो किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं तो वो वापस आएगा, जिसको आपको क्लियर करना होगा। और राधा जी का भी हमको पता है कि राधा जी ने अपनी पूरी लाइफ में कैसे उन्होंने अपने आप को कृष्ण जी को डेडिकेटेड किया। और डेडिकेशन के बावजूद भी वो देख लो खुद वो इतनी डिवोटी थी वो और मीरा जी, बट उन दोनों ने अपने रिकारनेशन में कितनी चैलेंजेस फेस किए, सोसाइटी को फेस किया, उनके लव को बहुत ज्यादा वो स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत कम देखा गया, उसको गलत नजरियों से ज्यादा देखा गया। जो इन लोग भगवान को नहीं बख्शते, और हम और आप तो क्या ही चीज है। तो बट इसमें भी डिवाइन बता रहा है कि आपने उस चीज में नहीं जाना कि कोई मेरे को इस बारे में क्या सोचता है, आपको पता है ना आप क्या कर रहे हो, डिवाइन को पता है। अब मैं हूँ, आप हो, हमको लगेगा कि हम कोई काम कर रहे हैं, हमको कोई देख नहीं रहे। ठीक है, आप अच्छा भी कर रहे हो बुरा भी कर रहे हो ना, यूनिवर्स इज ऑलवेज वॉचिंग यू व्हाट यू आर डूइंग, एंड योर डीड्स व्हाट you are giving to others will come back to you. Like they were just asking for five villages, nothing. Means if as a human being, if we see the king have so many properties, so five villages is not means the big thing, but the ego was there, and because of that they created this war, and they were not ready, they were so greedy, and they were in so much their ego that because of them they lost so many of their family members during the war. But if they have that awareness that okay, by giving five villages to them, if we will have a peaceful life. But the destiny was not designed that way. There was a lesson for both sides which they have to learn. Even after winning the war, the Pandavas, they were not on the earth, they left the earth. But all these things happen for a reason, so that there will be a balance on earth, all the energies will get balanced. So beautifully Lord Krishna is teaching us in a very unique way, and so many stories reminding. Literally don't know, when you were talking, it was like Krishan son, I was like, what? I googled it, and then I found out about, oh my god, like, you know what, we like he was a lord and his own son was cursed. How come this is possible? But then later on, um, Lord Krishna gave the shower to the baby, and means, he removed all the curse of the baby, because he is so spiritual. But the baby came with their own karma. How beautiful it is! It is not just Bhagavad Gita; it is our day-to-day life, what we are
learning every day. And when you were talking about when we were doing meditation, oh my God, I was just seeing Sudarshan Chakra, galaxies, and just calmness, peace, and nothing, and Lord Krishna standing, smiling, nothing else. And I was keep asking, is there any karma for me to still do? And he said, now you're free, you're free, you're free. You are not in that zone anymore. And I was like, I show gratitude for this. And we all have to think that way, um, where we have to request the most high supreme power that I'm under your protection, and I'm asking you to show me the right path where I can get rid of my bad karmas, bad debts. We all do mistakes, sometimes intentionally, sometimes unintentionally. Sometimes we are not mature when we do those mistakes. Later on, we realize, oh no, you know what? That time means I was wrong. But the time is not all the time same. That moment is not present. um, Yesterday someone put send me the message which I really like. Past and present. What is past? Present. Past is not present here right now. What is present here? The present gifts you have around you, your breath, of people around you. And give importance to the people right now who are in your life. Later on you are going to create the karma with them. If you were means in the past you were in the darkness, you were not aware, but now you are enlightened. Now you know that you know what I did. I have now the chance to get rid of those things which I did means or it was written in my destiny so that I can learn lesson. Yeah, I did so many blunder mistakes in my life, and so many time my family they get angry on me because of my bad choices. I struggled a lot. So I always say, you know what? When I was young, I was not aware of it, but now I understand that it happened for a reason, and I'm very happy with that. Whatever the outcome is. So be in surrender and be happy with your present moment. Present is your gift, and give that time to your family, your friends, whoever is around you, but in a balanced form where you are not out of your balance, where you are creating something for yourself. Thank you, deep, deep gratitude, Sujanari, for such a wonderful, bringing such a wonderful stories which are connected with that chapter, and on the same time, how divine is saying, look, and literally, I have no idea about Shishupal. Means I know the story from yesterday coming into my mind, but I forget the name. And when I was checking for Lord Krishna's surname, then he is Shishupal. Oh, his name is Shishupal. And I was like, thank you, Lord Krishna, for reminding me this. So God Himself is saying, when you are in surrender, I'm always there for you. Thank you, deep, deep gratitude. Thank you. Rajesh ji, I think, want to say something. First of all, thank you so much, Sujana ji, for this Bhagavad Gita session. And thank you to Monica ma'am as well uh, for Bhagavad Gita clarity about Shishupal and all. Ma'am, Monica, Shishupal is son of Krishna only, actually. Today only I come to know because वो ना बुआ का बेटे थे उनके। बुआ के बेटे थे। उनके ओके। बेटे का कृष्ण जी के बेटे का नाम प्रद्युम्न ऐसे कुछ था। हाँ, आप हाँ कुछ वर्ष कोई बेटे के बारे में, कृष्ण के बेटे के बारे में बात कर रहे थे आप एक्चुअली। हाँ जी। हाँ, प्रद्युम्न था कृष्ण जी का बेटा, जो ओके। कि हाँ जी, जिसको जो जिसके ऊपर ये सभी जो कर्म थे ना उनका, बेचारे उसके बच्चे के ऊपर वो सारा कर्ज आया। तो फिर उसको उसको जो डीमन था सांबरा, उसने 6 दिन का था वो, जब वो उसको ले गया और उसको उसने समुद्र में फेंक दिया, और वहां पे फिर एक मछली ने उसको निगल लिया था। ये कहानी दी हुई है, अब मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं है, बट उसको अकॉर्डिंग टू महाभारत,
Mashupal Parv, Samba, died because some rishis cursed him that he will die from his father's hand. In another version of the tale, one day Samba teased the saga Narad for his looks. तो जो अब हमको ये नहीं पता ना, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज ऑनलाइन होती हैं ये कि सच्ची में फैक्ट है, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था जब मैंने इसको पढ़ा। मैंने कहा ये क्यों मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये चीज भी आज शेयर करनी चाहिए। तो प्रद्युमन जो थे कृष्ण का बच्चा था, ही वॉज abducted बाय द डीमन सांबरा but was later rescued, proving his resilience and strength, known as the reincarnation of Kamdev. ओके, जो बच्चा था वो कामदेव का रिकार्नेशन था। द गॉड ऑफ लव, प्रद्युमन वॉज ए मास्टर ऑफ वॉरफेयर एंड आर्चरी। ओके, ये मुझे फर्स्ट टाइम पता चला एक्चुअली। मुझे भी आज पता, मुझे नहीं पता था। मुझे तो कृष्णा की तरफ से मुझे ऐसे गाइडेंस आई कि मुझे उनके बेटे के बारे में बताना है। एंड आई वाज शॉक्ड कि वो खुद इतने बड़े वो होके कैसे उनके बेटे के साथ में ऐसा हुआ। मैम और ये स्टोरी भी सच, श्री कृष्ण जी को भी शाप था तो उसकी वजह से उनको, मतलब कोई शिकारी उनको पैर पे मारता है तो वहीं पे उनका पृथ्वी लोक में हाँ, डेथ तो होता है। वो जब अपने आते हैं ना राम रूप में आते हैं, तो नहीं ये सॉरी, वो उन्होंने ये नहीं आपको पता रामायण में कि उनके जो राम जी के फादर होते हैं उन्होंने तीर मार के हिरण को मार दिया था, जो हमको यस। हमने स्टोरी सुनी हुई है। अम, हाँ। तो वो तीर इन्होंने मारा होता है। तो फिर ये कहते हैं कि इस लाइफ टाइम में फिर वो इंसान जैसे उनसे रिवेंज लेने के लिए आता है। तो फिर कृष्ण जी को पता होता है, तो वो जब वो तीर मारता है तो जब कृष्ण जी को के पैरों में लगता है, तो वो आके बेचारा बहुत सॉरी फील करता है कि अरे मैंने तो भगवान को ही ऐसे कर दिया, है ना। तो फिर वो कृष्ण जी कहते कि नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कहते क्योंकि ऐसे मैंने तुझे मारा था। तो कहते नहीं, क्या पता नहीं वो हिरन था कि क्या, कुछ ऐसे ही स्टोरी है आई थिंक। कृष्ण, आई एम नाउ गेटिंग कंफ्यूज। अब मुझे दो दो चीजें आ रही हैं कि फिर वो तीर इसलिए उन्होंने उसके लिए वेट किया कि ये आके ही मुझे किल करेगा। मैं आपको कल ना क्लियर करके बताऊंगी। मुझे स्टोरी याद है, पर मुझे जहां तक याद है कि उन्होंने किसी आइदर वो हिरन का था या इस ह्यूमन बीइंग को मारा था वैसे। तो उसकी वजह से उनको कर्स किया गया था और उन्होंने किया था। देखो ना, हमें खुद को कितनी सारी चीजें बाहर आ रही है ना, हमारी भी रिवीजन हो रही है। अगर किसी और को इसके बारे में पता है, हाईलाइट करना जरा। क्योंकि मैंने तो अभी रिसेंटली बहुत पढ़ा हुआ है इसके बारे में कि उनको वो मरे कैसे थे कृष्ण जी। एक मिनट, मैं अभी यहाँ पे देख बताती हूँ मैं आपको। कृष्ण जी क्योंकि ऐसे बता, यस, वो जो उन्होंने ना जब राम के अवतार में थे, तो मतलब उन्होंने कृष्ण उसको मार दिया था, हिरन को मार दिया था। तो वो ही हिरन की मिस्टेक की वजह से अ, वो आके इनको मार के गया। तो ये इट वाज डेस्टिन कि उन्होंने ऐसे ही मरना था। ओके, जब वो सीता को रावण जब पकड़ के ले जब हिरण को मारते हैं, वो उस हिरण की बात कर रहे हैं क्या आप? वो जब रूपदास को, मतलब रामायण में तो वही लिखा गया है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि यहाँ पे दिया है कि उनके लेफ्ट पैर के अंदर जो था वो तीर लगने की वजह से कृष्ण मर गए थे। तो उन कृष्ण की डेथ की स्टोरी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो पता मच। ही नहीं, काफी सारे लोग ना बाद में जब वो वीडियो देखेंगे कहेंगे इनको खुद को नहीं पता है। तो मैं इसलिए थोड़ा उसको देख रही हूँ कि पता लग जाए, तो हमको भी पता लग जाए कि ऐसा क्यों था, उसके पीछे का रीजन क्या था, क्यों हुआ था। Since you would be experienced the same.
अच्छा, गंधारी जो थी उन्होंने कृष्ण जी को उन्होंने भी एक श्राप दे दिया था कृष्ण जी को, कि जब उन्होंने देखा ना कि उनके सभी पुत्र मर गए हैं, सारा सभी जगह हुआ गया, तो उन्होंने कृष्ण जी को ये कहा था कि तुम भी जो है ना शांति से नहीं मरोगे, तुम्हें भी इसी तरह से ना जो दर्द भरी दुख ना दर्द से भरी हुई तुम्हें जो है मौत मिलेगी। और उसके बाद में फिर कृष्णा जो थे उनकी डेथ हुई कि यार कितनी है ये, कल पूरी मैं लेकर आऊंगी इसकी। अभी तो जितना है थोड़ी थोड़ी सी इसमें आ रही है, क्योंकि इसके ना भगवत गीता के चैप्टर 31 में है उनके बारे में, ओके। इसमें बताया हुआ है कि वो कैसे फिर हाँ, तो आएगा इसमें इनकारनेशन कैसे हुआ उनका ह्यूमन बीइंग के रूप में, और ये सारी चीजें कैसे हुई हैं अभी इसमें बता रहे हैं कि इनका क्या है एंड में। तो विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच सृजना जी, थैंक यू सो मच मोनिका मैम। थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए मैसेज आए सुजाना जी। अ, राजेश जी ने थैंक यू बोला आपको, और मीना जी ने आपको बोला आत्मवंदन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुजाना जी एंड मोनिका जी फॉर ऑल योर हार्ड वर्क in helping us on our soul path. It is not we are helping you, we are helping ourselves actually. थैंक यू मीना जी, आत्मवंदन। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस इन द अर्ली इन द मॉर्निंग। मुश्किल है अर्ली इन द मॉर्निंग कनेक्ट करने का। वो कल ही बोल रहे थे, she was telling yesterday, yeah, to I have to join you guys in the morning, so I'm proud of you, Meena ji, you joined us, thank you so much. Okay masters, deep deep gratitude, we'll meet again। आपने वाइंड अप करना है तो कर दीजिए, फिर आई एम गोइंग टू एंड द हाँ जी, सेशन। बोला करता था थैंक यू मोनिका। मास। हाँ जी। हाँ। हाँ, मुझे एक्चुअली बचपन से मुझे ऐसा लगता है, बचपन से आई डोंट नो इन टीन एज में कि मोक्ष लेना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, तो मुझे तब लगता था कि ऋषि मुनि लोग जाते हैं तो उनको ये मोक्ष मिलता है। ये पीएसएसएम में आने के बाद ही मुझे पता चला कि नहीं, अगर ऋषि मुनि लोग को भी फिर से पैदा होना पड़ता है, तो अगर उनको जाना है तो उनको फिर सांसारिक जीवन में आना पड़ता है। तो मुझे अब भी आई एम नॉट कॉन्फिडेंट व्हाई इट इज सो मच ऑफ कंफ्यूजन, मीन समवन इज सेइंग ऋषि मुनि लोग जाते हैं तो उनको जल्दी मोक्ष मिलता है, और यहाँ पे ऐसे में बोलते हैं नहीं, सांसारिक जीवन में आके फिर वो मोक्ष की तरफ आगे जा सकते हैं। व्हाट इज एक्चुअली। तब तब भी ऋषि मुनि वो कर्म के परे नहीं थे जी। राजा जी, जब हम ऑब्जर्व करें हमारे हिस्ट्री को, ऋषि मुनि के भी भार्य होते थे, I mean, उनके यहाँ भी पत्नी होती थी, उनके यहाँ भी संतान होते थे वो ऋषि मुनि। संन्यास संन्यास आश्रम हम तो आखिरी पड़ाव में, तेरे लाइफ में आखिरी पड़ाव में लेते थे। पर उनका कर्मानुभव सारे संसारिक जीवन में वो करते थे, करने के बाद जो कोई अपना विजडम है और बांटने का उनका उनका कर्म यही है ना, कि दुनिया को विजडम बांटे। जो वो विजडम बांटने की काम करते थे, वो अपने शिष्य को और या अपने संतान को उसका रेडी करके वो विजडम उन्हीं से लेने के लिए वर्ल्ड को बोल के, तब वो ये क्या बोलते हैं सन्यासी जीवन लेते थे। तब तक वो उनका क्रिया करते थे। हम सभी सारे की कलयुग में ऐसा क्या हुआ गया कि हमका ये अपार्ट अपार्ट करने का इतना लाइफ स्पैन नहीं है। तो हम शुरू से ही उसी थोड़ा संन्यास थोड़ा क्रिया सबको सबके बीच में हमको करना है। मतलब वी हैव टू बाइंड एवरीथिंग एंड लॉन्ग रन अलोंग हमारे चारे एक दो तीन चार जो भी कर्म का फेस है, वो सारे बांध के ही चलना है हम लोगों को। वन आफ्टर द अदर डजंट कम, हमको ना एक के साथ लेकर चलना है। तो कलयुग में हमारा लाइफ स्पैन छोटी पड़ गई, तो हमारा इनिशिएशन भी पहले ही हो जाता है, कि हमारा रियलाइजेशन भी पहले ही हो जाता है कि हमको उस पाथ में चलना है। तो वो रियलाइजेशन लेके ही हम कर्म करके जाते हैं। मतलब संसार आश्रम और संन्यास आश्रम में भेद फर्क नहीं है। इधर संन्यास आश्रम मतलब अभी भी कुछ संन्यास लोग हैं, महान महान भाव है जो त्याग देते हैं। पर हम सांसारिक जीवन में हमारे थॉट्स को त्याग देके वो संन्यास आश्रम हमको स्वीकार करना है। मतलब
हमारे थॉट्स ही हमारा संन्यास आश्रम का ये है, हमारे एक्शंस नहीं है। वही है जो मैं समझती हूँ। ओके, और थैंक यू एक सो ये मच। भी चीज है राजेश जी, अगर हाँ। आपने कोई चीज अभी एक्सपीरियंस करनी है, अभी आपकी पता है क्या होता है, आपको मोक्ष कब मिलेगा? मोक्ष तब मिलेगा व्हेन यू आई डोंट हैव एनी डिजायर. If I'm still ओके। holding something, oh, I want this, I want that, divine will say, okay, you have to work for that thing. Once you are desireless, you don't have any desires anymore. ये था ना हमारे जो एक ऋषि थे जो माँ काली का करते थे ना, वो उनको ना सिर्फ खाने खाने की बहुत आदत थी. तो कभी भी जब भी कभी सत्संग होता था वो खाना ही उठ जाते थे, तो उनकी वाइफ को ये चीज बड़ी वो गंदी लगती थी, कि ये इतने अच्छे संत हैं, इतने महान संत हैं, इतने लोग दूर दूर से आते हैं, इनका खाने में मोह ही रहता है, ये खाने को नहीं छोड़ते. तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला, जिस दिन मैंने मतलब खाना खाना बंद कर दिया ना, तो तुम सोच लेना कि मैं जल्दी ही अपने शरीर का त्याग कर दूंगा. क्योंकि उन्होंने एक वो डिजायर रखी कि मुझे खाना खाना है. और उनको पता था कि अगर मैंने भूख की तरफ अपना ध्यान नहीं किया, किसी एक चीज की तरफ अपना ध्यान नहीं किया, तो मैं मतलब मेरी डिजायर खत्म हो जाएगी, मुझे मेरा शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा. तो ये चीज होती है कि जब आप डिजायर लेस हो जाओगे, जब आप कर लोगे कि जो मुझे भोगना था मैंने भोग लिया है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, और मैं खुशी से, ये नहीं कि दिखावा करके, मैं खुशी से अपनी सभी डिजायर्स के लिए, सबके लिए हैप्पी हूँ. ये बहुत ये अवस्था पाना इजी नहीं है, इट्स वेरी हार्ड. तो जब तक आपका वैसा नहीं आएगा ना, तब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी. और हमारे बहुत सारे जीवन होते हैं क्योंकि उसमें हमें लेसन्स आती है. अभी हमारी में से कईयों की बेबी सोल है, कई मैच्योर सोल है, तो अभी कई लर्निंग स्टेज हैं. पर आप जब मेडिटेशन में बैठोगे ना, जितना आप मेडिटेशन में ध्यान करोगे, अगर डीपली चला गया आपका, 10 मिनट भी चला गया, 5 मिनट भी चला गया, आप अपने पिछले कर्म काट रहे हो, फिर आपको नई लाइट आएगी. जब हम दूसरों को सर्व करना शुरू, हमारी सभी की जिंदगी का लास्ट टास्क होता है लोगों को सर्व करना. जब आप उसमें आ गए ना, जहाँ पे आपने इन सभी चीजों में प्रायोरिटी सेटअप कर ली है कि अब मुझे सिर्फ ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, वो कहते हैं कि लास्ट आपका बर्थ होता है, उसके बाद नहीं आ पाते हो. और कुछ जिन लोगों के बच्चे नहीं होते हैं, उनका भी वो लास्ट बर्थ होता है, क्योंकि उन्होंने खुद बिफोर बर्थ उन्होंने ये मांगा होता है कि हमको बेबीज नहीं चाहिए, कि हम ये आखिरी जन्म है, तो मैंने अभी इसमें कुछ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं करना, जितनी भी चीजें हैं मैं पिछले अपने जन्मों की वो क्लियर करनी है. ये डिवाइन के प्लान है, हमारे तो है ही नहीं है. बट जो मैंने सुना है, जो मैंने पढ़ा है, वो उसमें यही चीजें मेंशन की हुई थी कि जब तक आपकी डिजायर नहीं ना कोई खत्म होती है, आप डिजायर के बिना हो जाते हो, फिर आपका कोई पर्पस नहीं रहता, फिर आप फ्री हो जाने के लिए. तो ये हमारी लाइफ का लेसन है. थैंक यू. मेरे मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है कि जब अगर अगर शादी नहीं होती, बच्चे नहीं होते, बीवी नहीं होते, तो हम लोग तो उस मोह से तो काफी दूर रहते ना, तो अभी तो सांसारिक जीवन में फंस के उस मोह से तो बाहर ही नहीं निकल सकते। रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं इनडायरेक्टली आ नहीं, ही जाती आप नहीं राजेश जी, आपके अलग अलग जिंदगी में अलग अलग चैप्टर है ना, जो हम अपने है। फैमिली के बीच में रह के सीख सकते हैं, वो हम अकेले थोड़ी ना सीख सकते हैं. ठीक है ना? यस। तो जब वो भी आपके लिए जरूरी है. जैसे अभी इन्होंने बोला कि जो ऋषि मुनि थे उनकी भी तो फैमिलियां थी ना. तो ऐसा नहीं है, फैमिली के बीच में रह के भी सीखना है. वो एक आपको एक अपना दायरा सेट करना पड़ता है, जब आप वो लेवल अचीव कर लेते हो जहाँ आपकी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, बच्चे भी फ्री हो जाते हैं, आप भी फ्री सा फील करते हो कि अब मैंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री हूँ, अब मेरे दिमाग पे कोई बर्डन नहीं है ना. तब आप इस यात्रा की तरफ हो जाते हो. बट जब आप इन बिटवीन होते हो, जैसे अभी आप लोगों की फैमिली, अब मेरे साथ मैं फ्री हूँ, मेरे बच्चों ने भी मुझे फ्री किया हुआ है कि मम्मी जो आपका दिल करता है आप वो करो, ठीक है. हर एक की फैमिली भी वैसी होनी चाहिए जो सपोर्ट करे वैसा, तब आप वो काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते. जैसे आप तो बहुत. अगले जन्म में किसने सोचा होगा कि हमें अगले जन्म में बच्चे नहीं चाहिए। लेकिन मैंने तो ऐसे देखा है, जिनके बच्चे नहीं है तो वो लोग तो मतलब लाइफ में मतलब टेंशन लेते हैं काफी कि हमारे बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है ऐसे। जैसे मेरी छोटी बहन है, अभी उसके बच्चे नहीं हुए, तो काफी नहीं वो देखो, टेंशन जो तो लेती ध्यानी होगा ना, जो ध्यानी होगा उसका रूट अलग होगा. जिसको अभी है। कुछ लेसन सीखने, उसका रूट अलग होगा. उसको जब तक ज्ञान के चक्षु ही नहीं है,
अब Yes. आपको की आई साइड खराब है, तो आपको आई ड्रॉप डालना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा ताकि आपकी क्लैरिटी आए, ठीक है। तो अभी उनके पास वो क्लैरिटी नहीं है। जब आप उनको मेडिटेशन से जोड़ोगे, आप अवनी माँ को जानते हो ना, अवनी माँ, अवनी Yeah. माँ हाँ, तो वो कितनी ग्रेट मास्टर है, तो वो खुद बताती हैं कि उनके पिछले रिकारनेशन में उनके बच्चे थे, तो इसमें उनके कोई बेबी नहीं है। ऐसे ही एक और मैंने किसी की स्टोरी सुनी थी, जिसमें वो कहते कि ना मेरी ना पिछली जिंदगी में ना बहुत सारे बच्चे थे, तो वो बच्चों से इतनी फ्रस्ट्रेटेड होगी। वो लेडी, उसके आई थिंक 13 बच्चे थे, तो वो कहती थी हे भगवान, मुझे अब तो बच्चा कभी चाहिए ही नहीं है। तो जब वो इस लाइफ में आई, तो उसको वही मतलब रहा कि सबके बच्चे हो रहे हैं, मेरी इतनी एज हो रही है, मेरे बच्चे क्यों नहीं। फिर उसको उसने अपना पास्ट लाइफ का रिग्रेशन करवाया। जब उसने अपना पास्ट लाइफ का रिग्रेशन कराया, मैं इसलिए कहती हूँ हमेशा पास्ट लाइफ के रिग्रेशन में जाओ। जहां आपको लगता है ना कि ये चीज मुझे नहीं क्लियर है, अपनी सिस्टर को भी आप ये बोलना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करे, उसको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो फिर वो उसमें पास्ट लाइफ में जाती है, तो फिर वो देखती है कि अरे मेरे तो 13 बच्चे थे, और मैं सारा दिन बस मतलब वो ही था। और वो 13-14 ईयर्स कॉन्टिन्यूसली जैसे बच्चे पैदा करती रही, तो उसकी बॉडी ने भी गिव अप कर दिया। तो शी वॉज सो मच फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री कि मुझे आगे से बच्चे ही नहीं चाहिए, ना बच्चे होंगे ना ऐसी कोई मतलब दिक्कत होगी। तो फिर इस लाइफ टाइम में फिर उसके कोई बच्चा नहीं हुआ। और फिर उसके बाद में फिर उसने कहा कि अच्छा, मैं मुझे ये सारी अवेकनिंग हो गई है, अब मैं जो है लोगों को सर्व करूंगी। और वो सेल्फलेस सर्विस करती हैं। मुझे उन लेडी का नाम भूल गया, वो बहुत अच्छा, वो पीएलआर का एक बहुत ग्रेट मास्टर है, जिनके साथ जिन्होंने अपने सेशंस की में उनके साथ में इंटरव्यू किया, तो बताया कि ये लेडी है, इनके पास लाइफ का हम लोगों ने किया था, इनके ऐसे ऐसे बच्चे थे। तो कितना शॉकिंग है, ये हमको पता ही नहीं है। कैसी कैसी मतलब आपको अब आप कमरे, अंधेरे कमरे में जाओगे, अंधेरा दिखेगा। बटन ऑन करोगे तो लाइट जलेगी। अपनी दिमाग की बत्ती की जलानी है हम लोगों ने। और कहना है कि जो चले गए ना, अगर कोई चीज नहीं है ना मेरे पास, उसके लिए तो मुझे करोड़ों बार थैंक यू करना चाहिए। वो मैंने पड़ाव पार कर लिया, मुझे क्यों उस चीज में से दोबारा जाना। ठीक है ना। चलो, थैंक यू। टाइम भी हो रहा है Thank you हम for लोगों ने। हाँ जी, थैंक यू। Hare Krishna. थैंक यू। आपने सुजाना जी अपने आप को म्यूट कर रखा है डियर। Thank you, masters. We'll meet tomorrow again. Thank you. Thank you.